This remaining part of the lesson has been taken from the lesson titled The Black Aeroplane. Now I start these paragraphs. Now I start explaining these paragraphs. Ferris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं था। रेडियो भी खराब हो गया था। मेरे पास न रेडियो था, न कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आंधी में मैं खो गया था। तब मेरे निकट बिल्कुल ही काले बादलों में मैंने दूसरा हवाई जहाज़ देखा। बिल्कुल ही अपने निकट काले बादलों में मैंने दूसरा हवाई जहाज़ देखा। दूसरे हवाई जहाज़ के डैनों पर कोई जलती हुई बत्तियां नहीं थीं, लेकिन अपने बगल में इसे उड़ते हुए मैं आंधे में देख सकता था। पायलट का चेहरा भी मैं देख सकता था, जिस पायलट का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया और इशारा किया, फॉलो मी। वह कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी। मैं जानता हूँ कि ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। वह जानता है कि मैं खो गया हूँ इस आंधी में, इसलिए मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow me. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अपने पुराने हवाई जहाज़ डकोटा के सामने उत्तर की तरफ धीरे धीरे मैंने अपने जहाज़ को मोड़ा ताकि उस काले हवाई जहाज़ के पायलट ने मेरे ओल्ड डकोटा के सामने उत्तर की तरफ धीरे धीरे अपने हवाई जहाज़ को मोड़ा ताकि उसके पीछे पीछे चलने में मेरे लिए आसानी हो। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह इस हवाई जहाज़ के पीछे पीछे चलने में मुझे काफ़ी खुशी हुई। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now, there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm.
आधे घंटे बाद वो विचित्र काला हवाई जहाज़ बादलों में मेरे सामने अभी भी था। अब ओल्ड डकोटा के पुराने डकोटा हवाई जहाज़ के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ने भर के लिए ईंधन था। तो अब मुझे तो फिर भय महसूस होना शुरू हो गया था। लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं भी आंधी में इसके पीछे पीछे चल पड़ा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक मैं बादलों से बाहर निकला और अपने सामने बत्तियों की 2 सीधी लंबी कतारें देखें। यह हवाई पट्टी थी। इट वॉज अ रनवे। यह हवाई पट्टी थी, यह हवाई अड्डा था। मैं सुरक्षित था। मैं उस काले हवाई जहाज़ के अपने मित्र को ढूंढने के लिए मैं मुड़ा देखने के लिए, लेकिन हवाई जहाज़ खाली। द स्काई वॉज एम्प्टी। हवाई जहाज़ खाली। द स्काई वॉज एम्प्टी। आकाश बिल्कुल खाली था, सुनसान था। वहाँ कुछ नहीं था। काला हवाई जहाज़ तो गायब था। मैं इसे कहीं नहीं देख पाया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो मैंने अपना हवाई जहाज़ उतारा और उस पुराने ओल्ड डकोटा हवाई जहाज़ से उतरने में ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ। कंट्रोल टावर के निकट, नियंत्रण मीनार के निकट। तो मैं गया और कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रण कक्ष में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. Another airplane up there in this storm? No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो उस महिला ने बड़ी विचित्रता से मुझे देखा, आश्चर्य से देखा, अर्थात वह हंस पड़ी क्योंकि दूसरा हवाई जहाज़ इस आंधी में, अरे दूसरा हवाई जहाज़ तो आज की रात उड़ान नहीं भर रहे थे, नहीं उड़ रहे थे, केवल आपके हवाई जहाज़ को छोड़कर जिसको मैं राडार पर देख सकती थी। इसलिए किसने बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना किसी ईंधन के सुरक्षित पहुंचने में किसने मेरी मदद की। और उस विचित्र काले हवाई जहाज़ का पायलट कौन था?
जैसे आंधी में बिना लाइट का, बिना बत्ती का उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था। Dear students, I'll try to satisfy you by answering these questions. Question number 1, I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं जोखिम उठाऊंगा। आखिर जोखिम क्या था, खतरा क्या था, और वो उसने इस जोखिम को क्यों वह उठाता है। तो द नरेटर, who is the pilot of old Dakota aeroplane, was flying from Paris to London. He was dreaming. He was dreaming to enjoy the weekend holidays with his family. The weather was fine and he could reach England in time to enjoy the breakfast. When he came 150 kilometers from Paris, he suddenly encountered huge black clouds like mountains. He had limited fuel, just enough to reach England. He could neither fly above the clouds nor go round clouds to avoid them. He could either go back to Paris or take the risk of going through the dark clouds. The risk was getting lost in the storm clouds. The narrator decided to take the risk as he wanted to spend the weekend with his family. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. So, as the narrator entered the storm clouds, his aeroplane started jumping and twisting. He became nervous when he found the radio, compass, and other instruments gone dead. It was pitch dark all around. He didn't know which direction to go. He could not contact the Paris control. He was lost in the storm. Question number 3. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? The old Dakota had given the narrator jitters. It shook horribly, jumped and twisted in the storm. Moreover, its compass, radio, and other such instruments had stopped working. It was no longer safe to fly it. So the narrator was not sorry to walk away from it after landing safely. Why does the narrator say, I landed and was not sorry? Question number 4. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? The question that the narrator asked her, who was the other pilot? He wanted to thank him, made her look strangely at him, as no sensible pilot would fly the plane in the storm. Moreover, no other plane was seen on the radar. His question perhaps seemed absurd and silly to her.
Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss discuss this among yourselves and give reasons for your answer. When the narrator was lost in the storm clouds, the pilot was a mysterious black aeroplane without lights, guided him to come out of the room, a storm cloud, and land safely. As soon as the narrator landed, he looked for the black aeroplane. He wanted to thank its pilots, but it was nowhere to be seen. Moreover, the lady in the control room confirmed that there was no other plane seen on the radar. Then who was the pilot who helped him? There were three possibilities. There are three possibilities. It could be a ghost whose aeroplane must have crashed in a storm like that, or it could be the result of the narrator's wild imagination. In distress, sometimes we start imagining things or pray to God. Our faith in God makes us think that God is helping us in this case and sent a mysterious pilot to help the narrator land safely. This is the end of the lesson. Thanks, dear students.